हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप चंद बेरा और आप सभी का टेक्नो नाकोड़ा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाला है कि विंडोज 7 को बूटेबल कैसे बनाया जाता है, विंडोज 7 की पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाया जाता है। सो गाइज, उसके लिए अपने को तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट है विंडोज 7 की इमेज फाइल, जो कि बहुत ही कंपलसरी है। सेकेंड, पेन ड्राइव जो कि 8 GB की कंपलसरी है। और थर्ड है कि अपने को पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आपको जल्द से जल्द दे सकूं। सो गाइस, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। दोस्तों, मैं ले आया हूं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले अपने को क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, इसमें टाइप करना है पावर आईएसओ। ठीक है फ्रेंड्स, पावर आईएसओ टाइप करने के बाद अपने को फर्स्ट साइड ओपन करना है। नेट स्लो चल रहा है दोस्तों, नेट स्लो चलने के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट प्लीज। विंडो 32 बिट्स डाउनलोड करना है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में 32 बिट्स डाउनलोड है। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। डबल क्लिक करके इसको रन कर लेते हैं। सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। आई फॉर एग्री करना, नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट। देखो फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। इसको कैंसिल कर देना, इसको भी कैंसिल कर देना। तो अपने को और आईएसओ पे डबल क्लिक करना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। इसको क्लोज कर देना, तो उसके अंदर जाना क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव। ओके दोस्तों, इसको यस कर देना, यस। थोड़ा सा वेट, फ्री वर्जन है दोस्तों। ओके, कैंसिल। यहाँ से अपने को इमेज फाइल चूज करनी है जो कि डेस्कटॉप पे पड़ी है, विंडोज 7। ओके, सेवन GB 8 GB पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेना और अपने को स्टार्ट। ओके, सो दोस्तों, ये पेन ड्राइव बूटेबल हो रही है। बिना पॉज करे दोस्तों वीडियो को देखते रहिए एंड तक। वेटिंग ड्राइव, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें टाइम लगता है दोस्तों। तब तक मैं वीडियो ये बनती है तब तक मैं पॉज कर देता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी पेन ड्राइव बूटेबल बन रही है। सो गाइस, एंड तक देखते रहिए, कुछ भी मिस नहीं करिए दोस्तों। अगर मिस करोगे तो आपके लिए ही नुकसान हो सकता है। सो गाइस, पेन ड्राइव बूटेबल होती है तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ।
सो दोस्तों अभी अपनी पेन ड्राइव 49% हुई है बूटेबल। सो दोस्तों देखते रहिए वीडियो को एंड तक। सो गाइस 90% हो चुका अपना पेन ड्राइव बूटेबल। सो गाइस इसमें 5 से 7 मिनट 10 मिनट समथिंग मान के चलो, इसमें समय लगना है तो लगना ही है। सो दोस्तों प्लीज़ वेट, वॉच माई वीडियो, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। दोस्तों उसमें अलग अलग पैकेट चलते रहते हैं, फाइलों के पैकेट्स होते हैं, उसके हिसाब से उसमें टाइम लगता है। सो दोस्तों पेन ड्राइव बूटेबल बनने वाली है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है। टाइमिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो गाइस पेन ड्राइव सक्सेसफुली, ओके दोस्तों, पेन ड्राइव सक्सेसफुली। नाउ मैं आपको बता देता हूँ पेन ड्राइव बूटेबल हुई है या नहीं हुई माय कंप्यूटर में, और ये विंडोज 7 पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसको यूज कर सकते हो। सो दोस्तों अगर आपको